हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल अगेन। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे न्यूयॉर्क सेशन में। सो आई वेलकम यू ऑल अगेन इन अवर NXG Markets YouTube channel and right now it's New York session 7:30 o'clock. So just अभी डेटा आया, we just got the data in Forex Factory. Let's look at the data first. So at 7 o'clock we had the trade balance, we had the unemployment claim and trade balance. So unemployment claim was the important data and we got the data here. So let me refresh the page, then we get the data number. So here 220k forecasted, but there and actual is 236, which is greater than 220k and 192k, right? So actual greater than forecast is good for currency, right? So dollar index should bounce from here as mentioned by this chart. So look at this Euro USD first. So this is my Euro USD 1-day chart, and Euro USD should reverse from here as I mentioned earlier. Let me drop a retracement again. This is the retracement, and look at the highs, these highs and these highs, right? So it should reverse somewhere around here. Let me then look at, first of all, look at the retracement, right? 61.8 retracement, 17.46, and then look at this. This one. So those who are looking for the short Euro USD, they can look, they can they can short right now with the stop loss of 1770. Right, you can short somewhere around 1740, 1730, and you can place a stop loss somewhere around 1770. Downside target is this one. This is the first downside target. This one. This is your first downside target in Euro USD. Fine. Now let's look at the dollar index. So this was the Euro USD. Let's look at the dollar index now. Good evening, Rajat-ji. A very good evening. I am going to discuss gold very soon. Have patience. So it has almost touched the 50% retracement zone. Let me show you the again. Again, I am going to drop a Fibonacci from here to here, and it has just touched 50% Fibonacci retracement somewhere around. Let me go to look at this. Yeah, 98.30. Right, it has just touched 98.30. So after the liquidity grab, I am expecting dollar index to should go down or should go up. Right, upside it should come somewhere around here. This one. This should be the upside target. Immediate upside target for gold, dollar index. Right? Fine. Now let's look at the USD CHF. USD CHF broken down, as I have mentioned,
This was the buying zone 0.7970, but it has broken down. Not an issue. Now downside it is open for this now. Now I remove this and downside it is open for this. So as I have always mentioned, always look for RR. Always look for the RR. So this should be the next strategy for USD CHF. Always have a small risk and a bigger target. Always. Always have a small risk and bigger target. Fine. नाजिया तबस्सुम सर यूरो यूएसडी में ऐसे लोगे नॉट एन इशू नाजिया यूरो यूएसडी में ऐसे हो गया बिल्कुल कोई बात नहीं यूरो यूएसडी वहां पर ने शॉर्ट किया था और मैंने जो एसएल आपको बताया था 40 पिप्स थोड़ा ज्यादा हो गया आपको शॉर्ट करना चाहिए आपको स्टॉप लॉस 20-30 पिप्स के आसपास रखो आप ज्यादा मत रखो ठीक है इफ वी आर हिटिंग अ स्टॉप लॉस नॉट एन इशू इट्स अ नॉर्मल थिंग राइट अब नेक्स्ट शॉर्ट जोन ये है 1740 के आसपास मेरा भी यूरो यूएसडी में 2 बार ऐसे हुआ बट अगेन थर्ड टाइम आई एम लुकिंग फॉर द शॉर्ट अपॉर्चुनिटी इन 1730 स्टॉप लॉस बहुत छोटा है ठीक है एंड आई एम डूइंग द लेस क्वांटिटी ठीक सो आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग लाइक दिस इन यूरो यूएसडी right so not an issue it's a normal thing as here and it happens and this is my further approach for euro USD at the same time I have discussed the dollar index also dollar index is situated at place where it can bounce look at this is the level I am talking about fine this one 50% 98.30 so now everyone is waiting for the gold let's go to the gold now did gold break the range let's check no gold did not break let me go to this XO this one yeah look at this range this 4-hour range is still intact and gold is hovering around here fine so this is the upper range and this is the lower range right so whenever you see the upper band you can looking for the short opportunity whenever you can see the lower range you can look for the buying opportunity या श्योर गोल्ड में बाय किया हुआ है मैंने ठीक है नाजिया जी कोई बात नहीं आपने गोल्ड में बाय किया हुआ है तो उसको रखिए मैंने लेवल बताए हुए थे गोल्ड में बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे थी अच्छा वो आपने बाय किया अब आप रखिए बेयर मिनिमम आप 4240 के आसपास आप अपना टारगेट मेंटेन रख सकते हो ठीक है 4240 तक आ जाएगा एट द सेम टाइम आप अपने प्रॉफिट को ट्रेल कर लीजिए ठीक सो आवरली चार्ट भी मैं एक बार दिखा देता हूँ सो दिस इज द आवरली चार्ट ऑफ गोल्ड लुक एट दिस ठीक है और ये गोल्ड में बाइंग जोन हो गया जैसे मैंने रजत जी को मॉर्निंग में बताया था ना दिस इज द बाइंग जोन दिस वन ये दिस इज द बाइंग जोन इन गोल्ड ठीक है सो बाइंग जोन देखो 2 बार है मॉर्निंग में भी मैंने डिस्कस किया था देन फिर मैंने लंदन सेशन में भी डिस्कस किया था अगर ये वाला जोन आपको मिलता है 4200 वाला मेरे को रजत जी ने भी बोला था कि मैं गोल्ड में लॉन्ग हूं तो मैंने बोला बने रहिए सर लॉन्ग ये वाला जोन आपका बाइंग जोन था 4206 4210 के आसपास ठीक एंड डाउन अपसाइड इट इज ओपन फॉर 4240 सो दिस इज हाउ गोल्ड इज अप्रोचिंग ठीक तो ये रेंज बनी रहेगी दिस रेंज शुड इंटैक्ट 4240 यस सो ये रेंज आपकी बनी रहेगी जब तक ये डायरेक्शनल मूव नहीं देता ठीक है ऊपर जाए शॉर्ट करो नीचे जाए बाय कर लो एज सिंपल एज दिस सो दिस शुड बी अवर अप्रोच इन गोल्ड लेट्स डिस्कस सिल्वर नाउ सिल्वर में एक बार देख लेते हैं क्या अपॉर्चुनिटी है इज देयर एनी अपॉर्चुनिटी इन सिल्वर सिल्वर में देखो कितना अच्छा ये देखो सिल्वर में भी मैंने रेंज बताई थी ये देखो ये मेरी लास्ट टाइम की इंटेक्ट है और मैंने आपको बोला था कि सिल्वर में आप ऊपर और नीचे ऊपर तोड़ेगा तो लुक फॉर दी बाइंग अपॉर्चुनिटी और नीचे तोड़ता है तो लुक फॉर दी सेट शॉर्ट अपॉर्चुनिटी
और देखो सिल्वर ने ऊपर तोड़ के कितना अच्छा मूव दिया। ठीक, सो गोल्ड भी ऐसे ही कुछ कर सकता है। ठीक, अब गोल्ड सिल्वर का अगला सपोर्ट जोन था ये वाला, लुक एट दिस, इट वाज अ वेरी सिंपल सपोर्ट जोन। ठीक है, और वहीं से आया और ये ऊपर चला गया। अब रेजिस्टेंस जोन ये वाला रहेगा, दिस इज योर रेजिस्टेंस जोन इन सिल्वर। ठीक है, मिड लेवल इजी, नॉट एन इशू, स्टॉप लॉस छोटा, टारगेट बड़ा, कीप इट सिंपल, देयर इज नो रॉकेट साइंस। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेवल गोल्ड सिल्वर का ये था, 6150 के आसपास आया, बाइंग अपॉर्चुनिटी दिया और ऊपर चला गया। ठीक, एयूडी यूएसडी देख लेते हैं एक बार। एयूडी यूएसडी रेंज में फंस गया, ये देखो ये देखो रेजिस्टेंस तोड़ के ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ये देखो एफओएमसी का मीटिंग आया, रेजिस्टेंस टच किया, और जैसे ही रेजिस्टेंस पे था आपका एम्प्लॉयमेंट क्लेम आया आज सुबह एयूडी यूएसडी का, सुबह 4-5 बजे के करीब, और वो अच्छा नहीं था डेटा, धड़ाम से गिर गया, नीचे आया, तो अभी रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट का काम किया। ठीक है, रेजिस्टेंस ने सपोर्ट का काम किया, वापस टच किया ये लेवल एंड देन अगेन ऊपर, अगेन ये लेवल आएगा, देन अगेन नीचे। सो ट्रेड लेवल टू लेवल, एंट्री आपकी प्रेसाइज होनी चाहिए, राइट, एंट्री आपकी प्रेसाइज होनी चाहिए, एंट्री प्रेसाइज होने के बाद छोटा स्टॉप लॉस, बड़ा टारगेट, अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स डिस्कस यूएसडी जेपीवाई। यूएसडी जेपीवाई अगेन आपका सपोर्ट जोन पे आ रहा है, इस सपोर्ट जोन पे ध्यान रखिएगा थोड़ा, लुक एट दिस सपोर्ट जोन। ठीक है, आज सुबह यूएसडी जेपीवाई की क्वेरी आई थी, सर अभी बाय करना चाहिए, तो मैंने मना कर दिया था कि अभी यहाँ बाय मत करो क्योंकि स्टॉप लॉस आपका बहुत नीचे आ रहा है, तो वेट फॉर दिस जोन टू बाय। तो अब ये वाला जोन जो आपका दिख रहा है 154.50 155, इस वाली जोन में बाय करना, और आपका टारगेट रहेगा फिर ये, और स्टॉप लॉस बहुत छोटा, स्टॉप लॉस आपका रहेगा 154.30 या 154.50। ठीक है, सो 30 से 40 पिप्स का स्टॉप लॉस यूएसडी जेपीवाई में, और टारगेट आपका रहेगा 300, 250 से 300 पिप्स, टारगेट सीधा आपका ये आ रहा है, राइट। सो दिस शुड बी योर स्ट्रेटजी, स्टॉप लॉस छोटे, टारगेट बड़े। So I'm opening the comment section now. If you have any query, मुकेश जी अगर आपको कुछ पूछना हो तो you can ask. रजत जी, नाजिया मैम, if you want to ask something, please ask. Right? And अमित जी अगर आपका कुछ query हो तो you can ask. So thank you everyone. Thanks for your time.
Now we will meet in Asian session tomorrow. Right? Till then, take care, manage your risk, reduce your position sizing, and control your volatility and control your volume. So tomorrow we will meet in Asian session now. Thank you everyone. Thanks for your time. Have a nice day. Bye bye. Take care.